Good evening, friends. Welcome to my channel. Today start Salesforce interview preparations some tips. सो आज देखते हैं हम क्या टिप्स होती है कि इंटरव्यू लेवल के लिए, क्योंकि फ्रेशर और एक्सपीरियंस होल्डर जो कैंडिडेट होते हैं उनको पता नहीं होता कि क्या प्रोफेशन करना चाहिए। अगर जब आप जॉब सर्च करते हो तो आपको दिक्कत आती है। सबसे ज़्यादा तो जो फ्रेशर कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, उनको दिक्कत आती है कि क्या कैसे सेल्सफोर्स एडमिन और डेवलपर के लिए प्रिपरेशन किया जाए, तो कैसे क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए और कैसे स्टडी करना चाहिए, उसके बारे में हम आज थोड़ा सा जो टिप्स है वो देखते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Tips to prepare for the Salesforce triggers interview. All interview really require the same preparation. Here is what I do. First, I take a part of the job description and find each bullet in the description and requirement and write my experience, a short summary of example project that related to the bullets. Must job description have a job description section and requirement the section. I complete this exercise for both. यहाँ पे आपको देखना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है और क्या बुलेट है, मतलब जो भी मेन पॉइंट है वो आप निकाल लो। उसके बाद में आप शॉर्ट समरी एग्जांपल दे सकते हो प्रोजेक्ट रिलेटेड, और जो भी बुलेट है आप वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट, सेकंड, आई रिसर्च द कंपनी, their website is a great place so to start. Then I research the leadership of the company and the department I am the interviewing with. LinkedIn can help a lot here. I took to see who each has held this job titles. Are there a tone of the peoples who had that titles and left? That would be great area to probe on the during your the interview. यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपने किसी कंपनी के लिए अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद आपको उस कंपनी की डिटेल्स, जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से उस कंपनी की सब डिटेल्स आपको चेक करना चाहिए। लिंक्डइन पे जाके आप उस कंपनी का प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो और किस लोकेशन में कंपनी और कितने उनके ब्रांचेस है और कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस बेस है या प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस है। तो ये आपको इसकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। और कंपनी का एटमॉस्फेयर कैसे है और जो भी, और कंपनी का आपको अगर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए और जो भी इंटरव्यूअर है, तो आप चेक कर सकते हो एचआर के डिटेल्स लिंक्डइन पर, क्योंकि कुछ एचआर के डिटेल्स लिंक्डइन पर दिए गए होते हैं। तो अगर आप लिंक्डइन से अप्लाई कर रहे हैं तो एचआर का डिटेल्स भी चेक किया करो, क्योंकि एचआर को आप मैसेज और कांटेक्ट भी कर सकते हो और आपको हेल्प भी हो सकती है। और तो उसके द्वारा आप, मतलब जॉब मिलने की थोड़ा सा आसान हो सकता है। जैसे आप कांटेक्ट करोगे तो थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। तो नेक्स्ट क्या है, जैसे फाइनली आई क्रिएट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क द प्रिंट इन आउट ऑफ द ब्रिंग विथ मी along with several copies of my resume. जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो उन क्वेश्चन के आप प्रिंट निकालो, जो भी आप नोट्स निकालो, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना है बार बार। So preparing for the Salesforce triggers interview involved of the combination of the theoreticals, understanding, practical application, and the staying the updated on the Salesforce change. Here are the 5 tips to the prepare effectively. यहाँ पे आपको Salesforce triggers के जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, theoretical है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मास्टर द बेसिक, मास्टर the basic, understand the core concept of the Salesforce triggers thorough
sorry uh, this is include the definition of the triggers, understanding the before and after triggers, knowing when to us them, and the various content variable be prepared to the explain the concept and their significations। मतलब यहाँ पे आपको जो बेसिक है मास्टर के जैसे यहाँ पे बिफोर और आफ्टर ट्रिगर्स के बेसिक क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए, कंसेप्ट क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, आप उसके अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो और आप अच्छे से एग्जांपल दे सकते हो और आंसर दे पाओगे तो आपको आसानी होगी इंटरव्यू कंटिन्यू करने में। और नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस। theoretical knowledge alone is not enough. Write triggers in Apex to automate the different process. Ensure data integrity. The more you code, the better you understand. Use the platform likes Threadhead, Threadhead, Salesforce developers for or Salesforce Stack Exchange for hand-on practice. Next, uh, understand governor limits. Governor limits are the external when working with triggers, understand what they are, why they exist, and the implications of hitting this limit. Practice writing the bulk files, triggers, and the controlling the re- requires calls to the avoid the hitting these limits. Next, study best practice. Familiarize yourself with best practice for the writing the triggers such as using the helpers classes, proper the committing the errors, handling the testing and more. There is a practice not only improve your the coding style but also help in the writing the more efficient and maintainable codes. Next, test triggers. Now, how to write test classes for the triggers, understand the implement importance of the achieving high codes coverage and the testing bulk for the bulk records and your virus the sensory. Next, stay updated. Salesforce frequently updated its features and introduce new ones. Keep track the of this change, especially those related to the triggers and apex thought. There is release notes, blog and forums. Next, real world scenario. Be prepared to the discuss real world scenario where you have used triggers to slow business problem. If you have not worked on the real project, consider case study and theoretical situation. It is all about applying the what you now to business scenario. Learn from the others, join Salesforce community, participate in discussions, ask questions, and learn from the other developers' experience. This will give you exposure of different the way to approaching problems and abundance your the knowledge base. Next, prepare prepare for an interview with the Salesforce or for the Salesforce related positions invalid involve or multiple aspect. You will need to be ready to showcase your the technical expertise, problem solving skills, and understanding of the Salesforce platform, as well as a domestic soft skills like communication and treat, teamwork. Here is a guides to help you the prepare. Sorry, technical preparation. Understand core Salesforce concept. Be well versed in the Salesforce basic, the like CRM, cloud computing, the Salesforce product, sales cloud, service clouds, marketing clouds, and the platform, the architectures. Next, deep dive into the specific the area, depending on of the roles.
delve into the specific such as the Apex programming, Visual Force, Lightning, compounds and integration patterns, data modeling, process automation, and reporting. Next, stay updated with the latest features. Salesforce releases the updated list of year, but familiarize yourself with the latest features and enhancement. Next, hand on the practice use Salesforce threadhead for practical experience and to the learn best practice. Next, review past project. Be prepared to the discuss you the previous work and the project, focusing on your the roles, challenges face and the solution the implemented. Soft skills preparation, communication skills practice articles. Your the thought clearly and conse- consequently, and effective communication is a critical in the client facing the roles. Next, problem solving the approach. Be ready to demonstrate your approach to solving slowing slow complex problem and possibility with the example for your the past experience. Next, teamwork and the collaborations. How enhance ready where you effectively collaborated in the team, especially in the multi-discipline teams. यहाँ पे आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे सेल्सफोर्स में और एडमिन में भी, तो उसकी क्वेश्चन के आंसर आपको देना चाहिए और एग्जांपल के थ्रू। जैसे नेक्स्ट और सिंसर बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, एग्जांपल दे के आप आंसर दे सकते हो। आपका बिहेवियर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आपको प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। टेक्निकल प्रिपरेशन करने के लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता है, जैसे कि अंडरस्टैंड हो द सेल्सफोर्स कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपकी, और डीप डाइव इनटू द स्पेसिफिक एरिया, मतलब आपको डीप में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो है लेटेस्ट फीचर, जो भी लेटेस्ट फीचर है सेल्सफोर्स में मार्केट में आया है तो उसका अपडेट भी होना चाहिए। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कभी कभी प्रैक्टिकल करने को आपको कुछ क्वेश्चन दे जाएंगे तो उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके देना होगा। और नेक्स्ट है जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और टीम वर्क कोलेब्रेशन, आपको टीम हैंडल करना आना चाहिए, या आपको टीम से बात करते रहना होगा, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो प्रोजेक्ट में तो वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा, इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है इसमें। नेक्स्ट क्या है, technical questions. These will revolve around the Salesforce features, customizations, coding if the applicable, and best practice. For example, how would you designing solution for the giving the business process using the Salesforce? Next, Salesforce business scenario based the questions of 10 you will be given the scenario to the understand your the practical approach. For the example, how would you the handle a situation where the client requirement the change might be thought the project. Be where the questions, expect the questions about the teamwork, handling the trust and dealing the with challenging the situation or client the next question about the Salesforce product and features. Be prepared to the discuss why is the Salesforce product and when and why you would you use them. Next, experience based the questions, discussing your the previous the project, the challenges you face and how you are the overcome them. यहाँ पे आपको टेक्निकल क्वेश्चंस, सेंसर बेस्ड क्वेश्चंस, बिहेवियर के क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन के बारे में आपको पूछे जा सकते हैं, और क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और रोल स्पेसिफिक द क्वेरीज, आस्क अबाउट डे टू डे responsibility to the team's structure and expectations from your the roles, project and the client engagement. Inquire about the type of the project, client integration and the methodology used.
training and development. Ask the opportunity learning and growth and including the certificate and training. Company culture and the value. Understand and company work culture value. How do you align the expectations and performance? The evaluations ask you the how perform the is measure and reward. यहाँ पे आपको जो से रोल स्पेसिफिक क्या है, रोल क्या दिया गया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको डे बाय डे आपको टीम में वर्क करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करके आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप फ्रेशर है तो आप सेल्सफोर्स एडमिन और डेवलपर के लिए ट्रेनिंग ले सकते हो और आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है सेल्सफोर्स एडमिन करियर में आपको, और आपका करियर भी ब्राइट हो सकता है। और नेक्स्ट है कंपनी कल्चर्स और वैल्यू। आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो कंपनी की डिटेल्स, पहले जॉब प्रोफाइल क्या है और कंपनी की डिटेल्स क्या है देख लो, और उसकी वैल्यू क्या है और उसके कमेंट क्या है, कैसे कंपनी में क्लाइंट के साथ या टीम के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। तो आप चेक कर सकते हो, या लिंक्डइन के थ्रू जो भी एम्प्लॉय वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनके द्वारा आप चेक कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो आपकी कंपनी कैसी है, कि उसका कल्चर कैसा है, तो आपको पता चलता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो आपका प्रमोशन होने की चांसेस ज़्यादा है। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हो तो आपको जॉब से निकालने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट है मॉक इंटरव्यू। प्रैक्टिस विद द मॉक इंटरव्यू टू द वर्ड एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करते हो, अगर आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो और आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। और खुद अगर आपके खुद वीडियो भी बना सकते हो, खुद घर पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है रिव्यू द सेल्सफोर्स कम्युनिटी एंड फॉरम्स। गेन इनसाइड द सेल्सफोर्स कम्युनिटी। आप सेल्सफोर्स की कम्युनिटी और फॉरम्स भी देख सकते हो, रिव्यू देख सकते हो कि क्या रिव्यू है। रिलैक्स एंड बी द योरसेल्फ। शो द enthusiasm and willingness to the lungs. And last, remember every interview is a two-way street. It's a it is a as much about them finding the right candidate as it is about you the finding the right company and role and good results. आपको कंपनी की डिटेल्स, कंपनी की जॉब फाइल क्या है आपको पता होनी चाहिए, आपके पास टेक्निकल की नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, और बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके, और बेसिक क्वेश्चन के आंसर आपको देना देना आना चाहिए। क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन के आप आंसर दे पाते तो आपको इंटरव्यू देने में आसानी होगी। और कोई अगर एक आधा क्वेश्चन मिस्टेक भी होता है तो एचआर और जो भी टीम है तो वो समझ में आता है उनको, क्योंकि अगर आप बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर है और आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो, तो आपका इंटरव्यू क्रैक करने में आसानी हो सकती है और इंटरव्यू आपका क्रैक हो सकता है। तो ये आपको ये टिप्स अगर बहुत फायदे अगर इस टिप्स से आप जाते हैं तो आपको पता हो चल जाएगा कि कैसे इंटरव्यू होता है और कैसे मतलब एचआर को और जो टीम लीडर होते हैं उनको क्या एक्सपेक्टेड है हमसे, तो जॉब रिगार्डिंग। तो यहाँ से आपको हेल्प होगी। तो आप ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।